that are related to a knee joint, right? Knee joint, अगर आपने जो ह्यूमन बॉडी में जितने भी जॉइंट्स हैं उसमें अगर नी जॉइंट नहीं पड़ा तो कुछ भी नहीं पड़ा, ठीक है। इसकी इम्पोर्टेंस इतनी ज़्यादा है एग्जाम वाइज भी और क्लिनिकल वाइज भी। इट इज़ वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट जॉइंट इन द बॉडी, राइट, बिकॉज इट इज़ द लार्जेस्ट जॉइंट, वन ऑफ द मोस्ट कॉम्प्लिकेटेड जॉइंट एंड वेट बियरिंग जॉइंट, ठीक है, जो कि डेली लाइफ में तकरीबन बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, राइट। तो बहुत ज़्यादा यूज़ होने की वजह से इसमें वियर एंड टियर के चांसेस भी ज़्यादा हैं, ऑस्टियोआर्थराइटिस और भी ये मुख्तलिफ क्लिनिकल कंडीशंस जो हैं ये इसके रिलेटेड हैं, ठीक है। तो इंशाल्लाह ये सब हम आज डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो स्टार्ट ले लें। ठीक है, तो सबसे पहले डिस्कस करते हैं कंटेंट्स ऑफ टुडेज लेक्चर, ठीक है। आज के अज्जाए तरकीबी क्या होंगे, ठीक है। कोई डिश अगर आप पकाते हैं ना तो उसके लिए अज्जाए तरकीबी उनकी ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। सबसे पहले आप वो सीखते हैं। तो जिस तरह पिछले वीडियोस में मैं आपको शोल्डर जॉइंट भी का भी बता चुका हूँ, ठीक है। तो शोल्डर जॉइंट की तरह नी जॉइंट में भी हम सबसे पहले थोड़ा बहुत इसकी वो तारुफ कराएंगे, उसके बाद आर्टिकुलेशन, कौन कौन से बोन्स हैं जो कि मिलकर ये जॉइंट हमारे पास बनाते हैं, ठीक है। अच्छा, उसके बाद ये किस किस्म का जॉइंट है। यू हैव ऑलरेडी स्टडीड इन योर जनरल एनाटॉमी different types of joint, right? The classification of joint on different basis. अच्छा, उसके बाद कैप्सूल है जॉइंट का, ठीक है। तो कैप्सूल को डिस्कस करेंगे कि ये कहाँ कहाँ तक एक्सटेंड हुआ है, कहाँ कहाँ पे इसकी अटैचमेंट है और इसकी कोई फंक्शन वगैरह है भी या नहीं है, ठीक है। फिर हर एक जॉइंट जो होता है तो उसे सपोर्ट देने के लिए उसके अक्रॉस मसल होते हैं और लिगामेंट्स होते हैं, ठीक है। तो वो डिस्कस करेंगे कि विच आर द लिगामेंट्स विच आर सपोर्टिंग द नी जॉइंट। उसके बाद पढ़ेंगे साइनोवियल मेम्ब्रेन, क्योंकि ये साइनोवियल जॉइंट है, ठीक है। तो साइनोवियल मेम्ब्रेन का डिस्कस करेंगे। उसके बाद बर्सा, ये भी आज डिस्कस करेंगे। these are some of the important structures, राइट। उसके बाद नर्व सप्लाई है, मूवमेंट्स है और रिलेशंस है, ठीक है। तो ये आज के लेक्चर के कंटेंट्स हैं। अच्छा जी, as already discussed, knee joint is one of the largest and most complicated joints of the body, which is formed by articulation between three bones: femur above, tibia below, and patella in front, right? Two femoral condyles, the lateral and the medial femoral condyles, they articulate with the corresponding tibial condyles to form synovial hinge joint. And then the patellar surface of the femur bone, it articulates with the patella to form the synovial gliding joint, ठीक है। अच्छा, नी जॉइंट जो है ऑलरेडी चूंकि हमने डिस्कस कर लिया कि ये एक complicated joint है, एक complex joint है. It is in turn made up of two different varieties of joint, okay. One joint is formed between femur and tibia, which is the synovial hinge variety, या आपके जनरल एनाटॉमी में उसे कॉन्डाइलाइट जॉइंट भी कहा गया है, ठीक है, because it is formed between the convex surfaces of the femoral condyles and the concave surfaces of the tibial condyles, ठीक है। और उसके बाद दूसरा सब जॉइंट जो इसमें मुश्तमिल है, ठीक है, that is formed between the femur and the posterior surface of the patella, and this is the synovial plane gliding variety, ठीक है। Here in this diagram you can see this is the anterior surface of the this is the anterior view of the knee joint, while this is the posterior view of the knee joint, ठीक है। अच्छा, above this is the femur, these two are the femoral condyles, this is the lateral femoral condyle, while this is the medial femoral condyle, right, and below this is the lateral condyle of the tibia and this is the medial condyle of the tibia, ठीक है। तो convex femoral condyles और concave tibial condyles, इनके दरमियान एक जॉइंट बना है जिसे condylite joint कहा जाता है, ठीक है। और दूसरा जॉइंट जो है that is formed between the
पेटलर सरफेस ऑफ द फीमर, ठीक है, इसको कहते हैं पेटलर सरफेस ऑफ द फीमर, ठीक है. And this small bone, which is hanging downward, this is the patella, right? This is the undersurface of the patella. So another joint, another subjoint in the knee joint, it is formed between the patellar surface of the femur and the posterior surface of the patella, ठीक है. यहाँ तक कोई इशू तो नहीं है किसी को? यहाँ तक सबको समझ आ गई? अभी तक हम सिर्फ ये पढ़ चुके हैं कि नी जॉइंट, इट इज वन ऑफ द मोस्ट कॉम्प्लिकेटेड, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड द लार्जेस्ट जॉइंट ऑफ द बॉडी. उसके बाद हमने पढ़ा है कि कौन कौन से बोन्स के दरमियान आर्टिकुलेशन के बाद ये जॉइंट बनता है, ठीक है. इट इज फॉर्म बाय आर्टिकुलेशन बिटवीन द फीमर अबव, टिबिया बिलो एंड पेटला इन फ्रंट, ठीक है. हाँ, पोस्टीरियर सरफेस ऑफ द पेटला, ये पेटलर बोन जो है, ये पेटलर बोन जो है, ये इसकी पोस्टीरियर सरफेस है, ठीक है. ये इस तरह उल्टा हुआ है. ये सरफेस अगर इसको ऊपर इस तरह हम उठाएं, दिस इज द क्वाड्रिसेप्स टेंडन, ठीक है, ये यहाँ आके लगेगा, ये यहाँ आके लगेगा, तो ये पोस्टीरियर सरफेस हो गया. और जो जो सरफेस हमें नजर नहीं आ रहा, दैट इज द एंटीरियर सरफेस, ठीक है. दिस इज हैंगिंग डाउनवर्ड. अच्छा जी. Next is the capsule of the joint, ठीक है. It is attached to the margins of the articular surfaces and surrounds the posterior aspect and the sides, ठीक है. अच्छा, articular surfaces, ये आप ये silver color में देख सकते हैं. This is the rough bone, while the part of the bone which is involved in the articulation or in joint formation, that is lined with the smooth hyaline cartilage and it is bluish or silver in color, right? यहाँ आप देख सकते हैं, this smooth surface, this is the articular surface of the femur. This small, here you can appreciate, this is the articular surface of the tibia and this is the articular surface of the patella, ठीक है. तो ये आर्टिकुलर सरफेस है और हमारे पास कैप्सूल जो है वो इन्हीं आर्टिकुलर सरफेसेस पे अटैच होता है, ठीक है. इन्हीं आर्टिकुलर सरफेसेस पे अटैच होता है, ठीक है. So it is attached to the margins of the articular surfaces and surrounds the posterior aspect and sides, ठीक है. ये articular surface above and below, it is attached to the articular surface. आप इस तरह इमेजिन कर लें कि आप जिस कमरे में बैठे हुए हैं, ठीक है, this is the joint cavity, the knee joint cavity, ठीक है, जहां पर आप बैठे हुए हैं. The roof above you, it is formed by the femur and the floor on which you are sitting, this is the tibia, right? The wall which is in front of you, this is the anterior surface. The wall behind you, which is the posterior surface. The wall on your right side and the left side, these two are the lateral and medial surface, right? ठीक है. तो इस तरह आप अगर इमेजिन कर लें तो ये जो कैप्सूल है, ये इस तरह जो छत पे जो आर्टिकुलर सरफेस है और जो फ्लोर पे आर्टिकुलर सरफेस है, ठीक है, उसके साथ लगा हुआ है. उसके बाद इट इज सराउंडिंग द पोस्टीरियर एस्पेक्ट एंड द साइड्स, ठीक है. ये कहां पर है? पोस्टीरियर सरफेस, पोस्टीरियर वॉल पे वहां पर मौजूद है, ठीक है. जो लेटरल वॉल है और जो मिडिल वॉल है वहां पर भी इट इज प्रेजेंट, बट इट इज एब्सेंट इन फ्रंट. आपके जो सामने वाली दीवार है, ठीक है, वहां पर ये कैप्सूल नहीं पड़ा हुआ, वहां पर मौजूद नहीं है. इट इज डिफिशिएंट देयर, राइट? क्यों डिफिशिएंट है? बिकॉज for the permittence of synovial membrane to pouch upward and form a bursa called the suprapatellar bursa. अभी bursa क्या चीज है इसको आगे चल के इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे. फिलहाल आप ये इमेजिन कर लें कि ये एक कुशन सा है, ठीक है, एक कुशन सा है, एक तकिया सा है, ठीक है. तो आपके जो आगे वाली दीवार है, इट इज बेसिकली डिफिशिएंट, वहां पर कैप्सूल नहीं पड़ा होगा, ठीक है. और कैप्सूल के अंदर अभी आगे इंशाल्लाह स्लाइड में हम डिस्कस करेंगे, कैप्सूल के अंदर हमारे पास फिर साइनोवियल मेम्ब्रेन होता है, साइनोवियल जॉइंट्स में, ठीक है. तो साइनोवियल मेम्ब्रेन जो है, इट इज लाइनिंग द लेटरल वॉल, इट इज लाइनिंग द मिडिल वॉल, इट इज लाइनिंग द पोस्टीरियर वॉल, सुपीरियर वॉल, inferior wall, but anteriorly, as the capsule is deficient, so the synovial membrane is pouching upward and forward to form a bursa called the suprapatellar bursa, ठीक है. आगे इंशाल्लाह स्लाइड में मैं आपको डायग्राम में दिखाऊंगा, ठीक है.
अच्छा, नाउ देयर इज आल्सो एन ओपनिंग इन द पोस्टीरियर सरफेस, ठीक है, आपके जो पोस्टीरियर वाल है वहां पर एक ओपनिंग है, ठीक है, इस कैप्सूल में, टू अलाउ द टेंडन ऑफ द पॉप्लिटस टू इमर्ज, ठीक है। पॉप्लिटस मसल आप लोग ऑलरेडी पढ़ चुके होंगे, ठीक है, डॉक्टर जावेद आई थिंक आपको पढ़ा चुका है, ठीक है। पॉप्लिटस मसल इट इज situated in the posterior compartment of in the posterior relation to the knee, ठीक है। और उस पॉप्लिटस मसल के टेंडन के इमरजेंस के लिए, उसे अलाउ करने के लिए इस कैप्सूल में पोस्टीरियरली भी एक ओपनिंग दी गई है, ठीक है। अच्छा, तो अभी अगर आप इमेजिन कर लें तो अपने रूम से अगर आप कंपेयर करें तो फिर इंशाल्लाह आपको आसानी होगी, ठीक है। अच्छा जी, फिर बात करते हैं स्ट्रेंथ की, ठीक है, कि कैप्सूल जो है इसे कहीं से कोई स्ट्रेंथ वगैरह कोई सपोर्ट मिली है या नहीं मिली, ठीक है। तो 3 दीवारें थी, ठीक है, लेटरल वॉल, मीडियल वॉल एंड द पोस्टीरियर वॉल, तीनों दीवारों को सपोर्ट दी गई है, ठीक है, फ्रॉम द सराउंडिंग टेंडन्स ऑफ द मसल्स। अच्छा, तो स्ट्रेंथ फ्रॉम द साइड्स is given by the expansion from the tendons of the vastus lateralis and the vastus medialis. Vastus lateralis और medialis already मैं आपको anterior compartment of the thigh में पढ़ा चुका हूँ, ठीक है। तो इनके tendons जो हैं, the tendon of the vastus lateralis and tendon of the vastus medialis, these two are giving support to the lateral and medial walls of the capsule respectively. Then the strength from the back is given by the expansion from the tendon of the semimembranosus muscle. Semimembranosus muscle, this is the muscle of the posterior compartment of the thigh, ठीक है। तो सेमीमेम्ब्रानोसस मसल से एक टेंडिनस एक्सपेंशन आई है जो कि इस कैप्सूल की पोस्टीरियर वॉल को सपोर्ट देती है, ठीक है। और इस टेंडिनस एक्सपेंशन को एक अलग नाम दिया हुआ है, द ऑब्लिक पॉप्लिटेल लिगामेंट, ठीक है। This is the diagram from your book, Snell's Anatomy by Region, ठीक है। This is the cross section of the knee joint at the level of the menisci, ठीक है। menisci भी आगे इंशाल्लाह आपको मैं समझाऊंगा, ठीक है। This pinkish layer, this is the skin, then the yellow layer, this is representing the fats below the skin, then this green thing, द आउटर सर्कल, ठीक है। ग्रीन जो है वो 2 सर्कल है, एक आउटर सर्कल है और एक इनर सर्कल है, ठीक है। इनर सर्कल और आउटर सर्कल दोनों एंटीरियरली फिर फ्यूज हो गए हैं, ठीक है। अच्छा, तो ये आउटर सर्कल जो है, दिस इज रिप्रेजेंटिंग द डीप फेशिया ऑफ द नी, राइट। जो थाई का डीप फेशिया था वो नीचे आया हुआ है, एंड दिस इज दैट फेशिया, ठीक है। दिस इज द फेशिया व्हिच इज सराउंडिंग द नी जॉइंट, ठीक है। उसके बाद द इनर सर्कल, this is representing the capsule of the knee joint, ठीक है। this is representing the capsule of the knee joint। अच्छा, तो आप यहाँ पर अभी आप ये देख सकते हैं, this is the semimembranosus tendon, this is the posterior wall of the capsule, and this semimembranosus tendon, this is giving a tendinous expansion to the posterior wall of the capsule, ठीक है। and this is given another name, the oblique popliteal ligament, ठीक है। ये वो चीजें जो कि हम प्रीवियस स्लाइड में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। the same membranosus tendon which gives a tendinous expansion to the posterior wall of the capsule, this is known as the oblique popliteal ligament, ठीक है। उसके बाद lateral और medial wall से वास्टस लेटरलिस और वास्टस मीडियलिस मसल से भी टेंडेंस एक्सपेंशन आए हुए हैं, जो कि इस डायग्राम में तो नहीं दिखाए गए, ठीक है। लेकिन लेटरल वॉल से वास्टस लेटरलिस मसल और मिडिल वॉल से वास्टस मीडियलिस मसल इसको सपोर्ट करता है, ठीक है। अच्छा जी, फिर बात करते हैं लिगामेंट की। लिगामेंट आर दोस कनेक्टिव टिश्यूज व्हिच कनेक्ट्स टू बोन्स विद वन अनदर, ठीक है। एंड दीज आर फॉर द सपोर्ट ऑफ द नी जॉइंट। हमारे पास 2 किस्म के लिगामेंट्स आते हैं। One type is the extracapsular ligament, those ligaments which are present outside the capsule, जो कैप्सूल अब आज अभी हम डिस्कस कर चुके हैं रिसेंटली। इस कैप्सूल के जो बाहर लिगामेंट्स हैं उसे कहते हैं एक्स्ट्रा कैप्सुलर लिगामेंट, ठीक है। और वो लिगामेंट जो कि कैप्सूल के अंदर है, ठीक है, वो लिगामेंट जो कि कैप्सूल के अंदर पड़े हुए हैं उसे कहते हैं इंट्रा कैप्सुलर लिगामेंट, ठीक है। अच्छा जी, तो एक्स्ट्रा कैप्सुलर लिगामेंट्स 4 किस्म, चार किस्म के होते हैं, ठीक है। There are 4 types of
ligaments which are present outside the capsule. One is the ligamentum patellae, ठीक है, ligamentum patellae. उसके बाद है LCL, the lateral collateral ligament. तीसरा है MCL, the medial collateral ligament. और चौथा है OPL, the oblique popliteal ligament, ठीक है. So these 4 ligaments, they are present outside the capsular capsule cavity, ठीक है. उसके बाद बारी आती है इंट्राकैप्सुलर लिगामेंट के, those ligaments which are present inside the capsule, ठीक है. So they are 2 in number. Number 1, the anterior cruciate ligament and the posterior cruciate ligament, ACL and PCL, ठीक है. तो हमारे पास जो लिगामेंट है LP, LCL, MCL, OPL, ACL and PCL, ठीक है. अच्छा, cruciate ये इसका मतलब है क्रॉसिंग लिगामेंट, ठीक है. द क्रॉसिंग लिगामेंट, cruciate ligament means the crossing ligament, ठीक है. यहाँ पर आप ये देख सकते हैं this one and this one, ये जो X बनाया हुआ है, ठीक है, जो क्रॉस बनाया हुआ है, these two are the intracapsular ligament, the cruciate ligament. इसमें जो anteriorly है इसे कहते हैं anterior cruciate ligament, और जो posteriorly situated है उसे कहते हैं posterior cruciate ligament, ठीक है. the ACL and the PCL. अच्छा, अब ये ACL को anterior क्यों कहा जाता है? Because it is inserted on the tibia anteriorly, ठीक है. It is inserted on the tibia anteriorly, while the PCL is known as the posterior cruciate ligament because it is attached to the on the above surface of the tibia posteriorly, ठीक है. अच्छा, तो ये दो जो हैं, these two are the intracapsular ligament, the cruciate ligament, ठीक है. ये दो हम डिस्कस कर चुके हैं. अभी आपको मैं बताऊंगा लिगामेंट पेटेलाe, LCL, MCL and the OPL, ठीक है. अच्छा, तो यहाँ पर आप ये देख सकते हैं, ये this is the fibula and this is the tibia. As you already know, the fibula is the lateral bone and the tibia is the medial bone, ठीक है. तो this is the lateral collateral ligament and this is the medial collateral ligament, ठीक है. The LCL and the MCL, lateral collateral ligament and the medial collateral ligament, ठीक है. उसके बाद anteriorly this is the ligamentum patellae or the patellar, ठीक है. The ligamentum patellae or the patellar ligament. अच्छा जी, हमारे पास चौथा लिगामेंट जो है this ligament which is present on the back side, ठीक है. जिसे कहते हैं oblique popliteal ligament, the oblique popliteal ligament, ठीक है. तो ये हमारे पास 4 लिगामेंट हो गए, the lateral collateral ligament, the medial collateral ligament, the popliteal ligament and the oblique popliteal ligament, the patellar ligament and the oblique popliteal ligament, ठीक है. अच्छा जी, next are the knee menisci, ठीक है. menisci are nothing else but cup-shaped fibrocartilages which are present within the knee joint, ठीक है. These two, the lateral meniscus and the medial meniscus, these two are cup-shaped rings, ठीक है. These two are the cup-shaped rings of fibrocartilage present within the cavity of the knee joint, ठीक है. तो इसे कहते हैं knee menisci. अच्छा, अब यहाँ पर आप देख सकते हैं, this is the posterior cruciate, this is the anterior cruciate ligament, this is the lateral collateral and this is the medial collateral ligament, ठीक है. अच्छा जी, these are two cup-shaped sheets of fibrocartilage. They are thick at the peripheral border and attached to the joint capsule, while they are thin and concave at their inner border, forming free edges, ठीक है. Upper surface are in contact with the femoral condyle and the lower surface they are in contact with the tibial condyle, ठीक है. इस डायग्राम में आप देख सकते हैं, these two are the lateral and the medial menisci respectively. Their upper surface is contact with this bone, the femur bone, the lateral and the medial femoral condyle, while its lower surface are in contact with the tibial condyles, ठीक है. उसके बाद हमने बात की इसके outer और inner margins की, ठीक है. This is the inner border and this is the outer border, ठीक है. So the outer border, this is thick, the inner border is thin,
the outer border is attached with the capsule, which is not given in this diagram, and the inner border, this is thin, concave, and lying freely. It has got no attachment, right? The function of the menisci are to deepen the articular surfaces of the tibia to receive the femoral condyles. Also, these menisci acts as cushions. ठीक है? menisci के दो functions हैं, चूंकि ये concave surface है, इसके जो upper surface है, that is concave. ठीक है? So it deepens the concavity of the tibia to receive the femoral condyles properly, right? एक ये फंक्शन है और दूसरा इसका फंक्शन है the cushioning effect, as it is made up of a tough fibrocartilage, so it has got a role in cushioning the bones involved in the knee joint formation, right? Each meniscus is attached above. Each meniscus is attached to the upper surface of the tibia by anterior and posterior horns. ठीक है? अच्छा, menisci का horns अगले diagram में इंशाल्लाह आ रहे हैं. ठीक है? Middle meniscus is also got attachment to the medial collateral ligament, hence relatively immobile, and that's why it is more prone to rupture. अच्छा, this is the anterior and this is the posterior horn, ठीक है, of the medial meniscus, while this is the anterior and this is the posterior horn of the lateral meniscus. ठीक है, हमने ये अभी पढ़ा कि the meniscus, both the menisci are attached to the tibia, to the upper surface of the tibia through anterior and posterior horns. ठीक है, तो इसके जो horns हैं, they are attached to the bone through a ligament. ठीक है, इस ligament के through attached है. अच्छा, उसके बाद हमने ये भी पढ़ा कि जो medial meniscus है, it is also attached to the MCL, the medial collateral ligament. It is one of the ligament, the extracapsular ligament of the knee joint. ठीक है, तो हमारे पास, अच्छा, जब मैं फर्स्ट ईयर में था, फर्स्ट ईयर का वाइवा दे रहा था, तो हमें एग्जाम में क्वेश्चन आया था. ठीक है, कि why the medial collateral ligament it is more prone to rupture. ठीक है, ये क्यों easily rupture होता है? तो तकरीबन मेरे ख्याल में इस पे 2 या 3 मार्क्स थे. उसके बाद जब मैं वाइवा में बैठा तो हमारे जो एचओडी थे उन्होंने भी मुझसे सेम क्वेश्चन किया कि why the medial meniscus is more prone to rupture. ठीक है, तो उसका आंसर ये है कि because the medial meniscus it is relatively immobile while the lateral meniscus it is free, right? यहाँ आप देख सकते हैं the lateral meniscus it is not attached to the lateral collateral ligament, but the medial meniscus it is attached to the medial collateral ligament. ठीक है, तो अगर एक चीज आपके पास immobile है, ठीक है, अगर आप सपोज बादाम तोड़ते हैं, ठीक है, बादाम है आपके पास, उसको आपने क्रैक करना है हथौड़े की मदद से, वो नट क्रैकर से नहीं, आपने हथौड़े से उसे क्रैक करना है, तो आप क्या करेंगे? आप उसे जमीन पे रख के या किसी हार्ड सरफेस पे रख के उसे इंडेक्स और थंब के दरमियान इमोबाइल करके उसके बाद आप हथौड़ा मारेंगे. ठीक है, ताकि वो इजीली रप्चर हो जाए. ठीक है, तो उसे इमोबाइल करते हैं. इसकी वजह से उसके रप्चर की, उसके डैमेज की, शेल के डैमेज के चांसेस बढ़ जाते हैं. उसी तरह मीडियल कोलेटरल लिगामेंट उसने भी इस मीडियल मेनिस्कस को इमोबाइल किया हुआ है. ठीक है, तो इट इज इजीली क्रश्ड between the tibia and the femur. ठीक है, while the lateral meniscus it is not attached to the lateral collateral ligament. ठीक है, अगर आप बादाम को इस तरह जमीन पर रखेंगे तो आपके पास चांसेस बढ़ जाते हैं कि आप उसे हथौड़ा मारेंगे और वो आपसे इट विल फ्लाई अवे. ठीक है, आप उसे शायद तोड़ ना पाए. ठीक है, so this is one of the most important question that can be asked into the knee joint. ठीक है, एंटीरियर और पोस्टीरियर हॉर्न्स कहते हैं सींगों को. ठीक है, करुणता होगा ना हॉर्न. ठीक है, नोजमसा द मेनिस्कस पार्ट्स. ठीक है, مخي طرف ته دي سنرا شويه خكرون دكي ناغي ته انتير هون ولا شيء او شاته چې نرا خكرون دكي كم چې نرا شويه د دې ولا شيء पोस्टीरियर هون. ठीक है, कोई रॉकेट साइंस मेरे ख्याल में इसमें नहीं है. ठीक है, खैर इंशाल्लाह आज अंदाजा ये है कि हमारे पास टाइम बचेगा और हम थोड़ी बहुत रिवीजन या डिस्कशन कर पाएंगे. ठीक है, अच्छा जी, नेक्स्ट इज द साइनोवियम ऑफ द नी जॉइंट. ठीक है, साइनोवियल जॉइंट को साइनोवियल जॉइंट क्यों कहा जाता है? बिकॉज ऑफ दिस साइनोवियल मेम्ब्रेन.
ठीक है, उसमें ये साइनोवियल मेम्ब्रेन होता है, और साइनोवियल मेम्ब्रेन इट इज a secretory layer which secretes a fluid known as the synovial fluid, ठीक है, which is meant for the lubrication of the knee joint, ठीक है. अच्छा, so this translucent grayish thing, this sac-like structure, this is representing the synovium of the knee joint, ठीक है. अच्छा, जिस जॉइंट का भी साइनोवियम आप पढ़ें तो उसमें चंद एक बातें जो है वो कॉमन होती है. लेटरली और मीडियली ये जॉइंट कैप्सूल के साथ अटैच होता है. सुपीरियरली इट इज अटैच्ड टू द articular surface of the above bone. Inferiorly it is attached to the articular surface of the bone below. अच्छा, उसके बाद पोस्टीरियरली भी चूंकि कैप्सूल हमारे पास प्रेजेंट है तो पोस्टीरियरली भी इट इज अटैच्ड टू द, it is lining the capsule on the back side, but anteriorly as discussed in knee joint, anteriorly the capsule is deficient, right? अच्छा, तो कैप्सूल चूंकि डिफिशिएंट है तो उसमें ये साइनोवियम ऊपर की तरफ उभरा हुआ है, ठीक है, टू फॉर्म ए बर्सा नोन एज द सुप्रापेटलर बर्सा, ठीक है. ये पेटला है और पेटला से ऊपर जो बर्सा है उसे कहते हैं सुप्रापेटलर बर्सा, ठीक है. साइनोवियम it lines the capsule attached to the articular margins and out pouches above anteriorly to form the suprapatellar bursa, ठीक है. ऑलरेडी 2-3 दफा हम डिस्कस कर चुके हैं. anterior wall of the capsule of the knee joint is deficient, so the synovial membrane it is protruding forward and upward to form a bursa which is situated above the patella. That's why it is known as the suprapatellar bursa, ठीक है. This extends beneath the quadriceps muscles 3 finger breadth above the patella, ठीक है. अच्छा, यहाँ पर this is here the muscles of the anterior compartment of the thigh are supposed to be present, ठीक है. The quadriceps femoris muscle, तो उसके जो टेंडन्स हैं उसके दरमियान ये suprapatellar bursa पड़ा हुआ होता है, ठीक है. उसके बाद the above bursa is supported by articularis genius muscle, a portion of the vastus intermedius muscle, ठीक है. अच्छा, तो क्वाड्रिसेप्स मसल के दरमियान ये पड़ा हुआ है और उसके बाद इस बर्सा को अपनी जगह पर रखने के लिए, इसको सपोर्ट देने के लिए हमारे पास एक मसल है जिसे कहते हैं आर्टिकुलरिस जीनस मसल, ठीक है. आर्टिकुलरिस जीनस मसल, आर्टिकुलरिस द मसल रिलेटिंग टू द बोन, द जॉइंट, ठीक है. जॉइंट से रिलेटेड कौन सा जॉइंट? जीनो, ठीक है, नी जॉइंट. Articularis genus, the muscle relating to the knee joint. अच्छा, and this muscle it is a portion of the vastus intermedius muscle, ठीक है. जो vastus जो quadriceps femoris muscle है उसमें से सबसे deep muscle जो है that is the vastus intermedius muscle, and this is giving a small portion which is given a separate name, the articularis genus muscle, and this is meant for the support of the bursa, ठीक है. It outpouches below posteriorly on the posterior surface to of the popliteus to form the popliteus bursa, ठीक है. अच्छा, जब हम कैप्सूल पढ़ रहे थे तो हमने डिस्कस किया था कि एंटीरियर वॉल भी डिफरेंट है जिसमें सुप्रापेटलर बर्सा जाता है और पोस्टीरियर वॉल वो डिफरेंट तो नहीं है, ठीक है, दैट इज इन प्लेस, बट देयर इज अ स्मॉल होल in the posterior wall of the capsule of the knee joint for the permittence of the popliteus मसल टेंडन, ठीक है. और उस पॉप्यूटस मसल के टेंडन को उसको सराउंड करने के लिए फिर एक बर्सा दी गई है, ठीक है, फ्रॉम द साइनोवियम, एंड दिस इज द पॉप्यूटियल बर्सा, ठीक है. फिर एक और बर्सा है जिसे कहते हैं सेमी मेम्ब्रानोसस बर्सा. इट इज प्रेजेंट बिटवीन द मीडियल हेड ऑफ द गैस्ट्रोक्नीमस, मीडियल फेमोरल कॉन्डाइल एंड द सेमी मेम्ब्रानोसस टेंडन, ठीक है. ये बर्से आगे चल के आ रहा है, ठीक है. तो आप अगर डायग्राम में देख लें तो आपका फिर यकीन ज्यादा पुख्ता हो जाएगा, ठीक है. अच्छा, as already discussed, the knee joint it is having this synovium, ठीक है, जो कि anteriorly जो कैप्सूल डिफरेंट है उसमें ये synovium ऊपर की तरफ उभरा हुआ है, and it is forming a bursa which is situated above the patella known as the suprapatellar bursa, ठीक है. अच्छा जी, फिर साइनोवियम में थोड़ी बहुत बातें और भी आती हैं. एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसमें कि इट इज रिफ्लेक्टेड
forward from the posterior surface of the capsule around the front of the cruciate ligament, so that the cruciate ligaments, they lie behind the synovial cavity and are not bathed in the synovial fluid. ठीक है, ये कहते हैं कि ये जो साइनोवियम है, ठीक है, एंटीरियर वॉल पे तो ये डिफरेंट है, उसके बाद लेटरल वॉल कैप्सूल के साथ साथ ये आया हुआ है, उसके बाद पोस्टीरियर वॉल के साथ भी ये आया हुआ है, लेकिन जैसे ही जो क्रूशिएट लिगामेंट वो आते हैं तो ये एंटीरियरली रिफ्लेक्ट हुआ है, ठीक है, सो दैट द कैप्सूल इज प्रेजेंट एंटीरियरली टू द क्रूशिएट लिगामेंट. ठीक है, एक स्लाइड तक पीछे, अच्छा जी, पीछे जाते हैं, पीछे एक स्लाइड था जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि हाउ द क्रूशिएट लिगामेंट्स दे आर स्पेयर्ड फ्रॉम द कैप्सूल. अच्छा, अब इस डायग्राम में आप देख लें, होप आपको प्रॉपर्ली दिखाई दे रहा है. ठीक है, this is the skin, this is the subcutaneous tissue, the outer layer, this is the fascia of the thigh. ठीक है, thigh which is extended below to form the fascia of the knee joint. ठीक है, उसके बाद this is the capsule of the knee joint. ठीक है, तो कैप्सूल जो है ये तो इसको सराउंड कर रहा है. उसके बाद ये लाइन जो है, ये जो इनकम्प्लीट लाइन है, जो पार्शियल लाइन है, ब्लैक कलर. ठीक है, आप मेरे पॉइंटर को फॉलो कर रहे हैं, this partial line. ठीक है, this is representing the capsule of the knee, this is the representing the synovium of the knee joint. ठीक है, अच्छा, तो synovium जो है, चूंकि आर्टिकुलर सरफेस जहां तक गया हुआ है तो वहीं तक ये synovium अटैच है. ठीक है, अच्छा जी, ये पोस्टीरियरली आता है, यहां तक आ जाता है, लेकिन जैसे ही ये क्रूशिएट लिगामेंट पहुंच जाते हैं, दिस इज पोस्टीरियर क्रूशिएट एंड दिस इज द इंटीरियर क्रूशिएट लिगामेंट, जैसे ही ये क्रूशिएट लिगामेंट पहुंच जाते हैं तो दिस इज रिफ्लेक्टेड एंटीरियरली. ठीक है, and then comes back. ठीक है, so that these two ligaments, they are lying posterior to the cavity of the synovium. This is the synovial cavity. ठीक है, so these two ligaments, they are situated posteriorly to the synovial cavity, and in the synovial cavity, as you know, that the synovial fluid is present, so the anterior and the posterior cruciate ligament, they are not bathed in the synovial fluid. ठीक है, what does it mean? that was an important point. बरसा, अजीजुर रहमान, बरसा भी आ रही है. ठीक है, और बरसा जो है ना, वो सारे हम इंशाल्लाह भी डिस्कस करेंगे, इससे मत डरें. ठीक है, अच्छा, समझ आ गई? हाँ जी, زي زو لك بوختو کې ریپیټ کوم. ټیک ده، دا ډاټډ انکمپلیټ لاین چې ده کنه، نو دا زموږ سره ساينوویم اف د نی جوینټ ریپرزینټ کوي. ټیک ده، ساينوویم اف د نی جوینټ څنګه چې کیپسول بالکل چار چاپیره ده کنه، او د کیپسول هر سره انکیپسولیټ کړل دي، هر سره بند کړی دي. ټیک ده، د ټولو مارجنز نه هر سره بند کړی دي. نو دغه شان دي د ساينوویم نه ده. ټیک ده، ساينوویم انټیریلی خبر برابر آرټیکولر سرفیسز سره اٹیچ ته، posterior laterally هم راغله دی، یا posteriorly هم راغله. خو چې څنګه دا دوه کروشیټ لیګمنټ ګونګاران راشي کنه، وایره تاسو سره مینه لګي. ټیک ده، نو انټیریرلی ریفلیکټ شي. ټیک ده، او دا غینه بعد د انټیریور کروشیټ لیګمنټ نه د را چاپیر شي او بیا شاته راشي، وایره تاسو ځوان سره زمانه لګي، تاسو زموږ د برادرۍ نه بهر یې. ټیک ده، نو دا انټیریور پوسټیریور کروشیټ لیګمنټ چې دی کنه، دا د ساينوویل کیویټي د دینه بهر شي. ټیک شو، وایره تاسو ځان بهر چې کوم دی نو اوسېږي او دنه مرزه د ساينوویل کیویټي ته مرزه. ټیک شو، صرف دغه مې ویل غوښتل چې anterior posterior cruciate ligament, these two ligaments, they are lying outside the synovial cavity, they are intracapsular ligament, they are बेहतरीन एमसीक्यूज पे बन सकता है. ठीक है, अगर मैं नी जॉइंट पे एमसीक्यू बनाऊंगा, पिछले साल मैं बना भी चुका था. ठीक है, मॉड्यूल में वो लिगामेंट जो कि इंट्राकैप्सुलर है, ठीक है, बट दे आर प्रेजेंट आउटसाइड ऑफ द साइनोवियल कैविटी. पिछले साल मैं एमसीक्यू दे चुका था, जो कि एग्जाम में आया हुआ था. ठीक है, आपके मॉड्यूल एग्जाम में, तो ये इट इज वन ऑफ माय फेवरेट एमसीक्यू. ठीक है, अच्छा जी, चलें बढ़ते हैं वापस अपने टॉपिक की तरफ. ये अभी हमने डिस्कस कर लिया. ठीक है, अच्छा जी, नेक्स्ट, इन इंटीरियर पार्ट ऑफ द साइनोवियल मेम्ब्रेन, it is reflected backward from the posterior surface of the ligamentum patellae to form the infrapatellar fold. The free fold are termed as Eller fold. ये खैर ये इंशाल्लाह डायग्राम में आपको समझ आ जाएगा, आगे आ रही है. ठीक है,
अभी वन ऑफ द मोस्ट अवेटेड टॉपिक बाय यू पीपल, द बरसा। ठीक है, बरसा क्या चीज है? बरसा are something which are found whenever the skin, muscle or tendon they are rubbing against the bone। ठीक है, ये साइनोवियम की तरह इसका लेयर होता है और इसके अंदर भी साइनोवियम की तरह फ्लूइड होता है, एंड either it is communicating with the neighboring synovial cavity or it is free lying। ठीक है, साइनोवियम की तरह एक चीज है, उसी की तरह फ्लूइड सिक्रीट करता है और उसी की तरह इसके अंदर फ्लूइड होता है। ठीक है, और इसका काम है कुशनिंग देना, कुशन देना। ठीक है, फ्रिक्शन को कम करना। जहां कहीं पर भी स्किन या मसल या टेंडन वो बोन के अगेंस्ट रब करता है, ठीक है, तो वहां पर बर्सा पड़े हुए होते हैं। ठीक है, विच आर सॉफ्ट बैग्स ऑफ साइनोवियम। ठीक है, एंड दे आर फॉर द रिड्यूसिंग ऑफ द फ्रिक्शन। अभी नी जॉइंट की बर्सा को अगर हम डिस्कस करें तो ये दुनिया शे है। ठीक है, ये दुनिया शे बरसा है, लेकिन जो इम्पोर्टेंट है उसमें 4 are situated anteriorly while 6 are situated posteriorly। ठीक है, suprapatellar and popliteal always communicate with the knee joint cavity and semimembranosus sometimes communicates with the knee joint cavity। ठीक है, अभी बरसा आपको मैं डायग्राम में भी दिखाऊंगा और आपके मैं अलग से भी पढ़ाऊंगा। ठीक है, इसके इसके नाम मैं आपको बताऊंगा, लेकिन फिर आप सिर्फ ये याद कर लें कि सुपरापेटेलर बर्सा जो कि ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं, दिस इज वन ऑफ द बर्सा which is formed by the anterior and the upward extension of the synovium of the knee joint। So it is communicating with the knee joint cavity, with the synovium of the knee joint। and popliteal bursa, ठीक है, जो कि जो posterior wall पे जो वो थोड़ा सा वो शगाफ थी, the hole in the posterior wall for the popliteal tendon and for the popliteal bursa, these two bursa they are always and always communicating with the synovium of the knee joint, while the semimembranosus bursa this is sometime communicating and sometime not, right? अच्छा जी, तो इंटीरियर बर्सा विच आर 4 इन नंबर। ठीक है, उसमें आते हैं सुपरापेटेलर बर्सा, प्रीपेटेलर बर्सा, सुपरफिशियल इंफ्रापेटेलर बर्सा एंड डीप इंफ्रापेटेलर बर्सा। ठीक है, अच्छा, तो अगर आप इसको देखें तो एक है सुप्रा पेटेला, पेटेलर बोन के जो कि इट इज द बोन विच इज सिचुएटेड ऑन द इंटीरियर साइड ऑफ द नी जॉइंट, तो उस पे उसके रिलेशन पे ये बर्सा है। ठीक है, अगर अगर बर्सा की सिचुएशन की पोजीशन जो है इट इज अबाउट द पेटला, सो इट विल बी नेम्ड एज सुप्रापेटेलर बर्सा। प्रीपेटेलर, दिस द बर्सा व्हिच इज प्रेजेंट एंटीरियरली टू द पेटला। ठीक है, और उसके बाद ये दो, दीज टू आर द इंफ्रापेटेलर बर्सा। ठीक है, जिसमें एक सुपरफिशियल और एक डीप है। तो पेटला के आगे, पेटला के ऊपर और पेटला के नीचे। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं दिस इज द पेटला। ठीक है, so the bursa in front of the patella, this is the pre-patellar bursa, the pre-patellar bursa। ठीक है, the bursa given in green, these are not communicating with the knee joint। ठीक है, with the knee joint cavity, while the bursa given in the red or the maroon color, these are communicating with the cavity of the knee joint। ठीक है, अच्छा, so this is the first bursa, the pre-patellar bursa, the bursa which is situated anteriorly to the patella। ठीक है, उसके बाद these two are the infrapatellar bursa in which one is superficial and the other is deep। So superficial infrapatellar bursa and the deep infrapatellar bursa। The third bursa which is having communication with the knee joint synovial cavity, this is the suprapatellar bursa। ठीक है, the suprapatellar bursa। So these four are the bursa of the knee joint। अच्छा, अभी जो पॉइंट हमने पिछले वीडियो में डिस्कस करना चाहा, ठीक है, हमने कहा कि जो एंटीरियर और पोस्टीरियर क्रूशिएट लिगामेंट है, these two are not bathed in the synovium, right? And these two are situated posteriorly to the synovium, right? So this red color layer, this is representing the synovium of the knee joint, and these two anterior and posterior cruciate ligament they are situated posterior to the synovium। ठीक है, अच्छा जी, अभी बात करते हैं पोस्टीरियर बर्सा के, विच आर 6 इन नंबर, जिसमें दो इंपॉर्टेंट बर्सा है, द पोप्लिटेल बर्सा एंड द सेमी मेम्ब्रानोसस बर्सा। ठीक है, उसके बाद tendinous insertion of biceps femoris muscle
उसके साथ भी एक बर्सा रिलेटेड है. Tendons of the sartorius, gracilis and semitendinosus muscle उसके साथ भी है. And beneath the lateral and the medial heads of the gastrocnemius muscle. These are some of the unimportant bursa, but the well-known bursa they are the popliteal bursa and the semimembranosus bursa. ठीक है. अच्छा, तो popliteal bursa which is present between the tendon of the popliteus muscle. ठीक है. This is the popliteus muscle, right? This is the tendon of popliteus muscle, and this is the bursa which is present just below the tendon of the popliteus muscle. So this is the popliteal bursa, right? Now this is the semimembranosus muscle, and the muscle which is situated, the bursa which is present beneath the semimembranosus tendon. This is the semimembranosus bursa, right? ठीक है. नर्व सप्लाई इंतहाई आसान. ठीक है. ये रेड में जो दिया हुआ है इसको जरा रीड कर लें. All the major nerves of the lower limb they contribute to the innervation of the knee. ठीक था. وجي كم نرى خليك أنا the knee joint په خوا شابه جو بس لاسي خلاصي وصل کړل. ٹھیک ده. femoral nerve د بر نه روان دی anterior compartment of the thigh دا غي نرو ته اخر ورسره لاسي خلاص کړل دی. دا غي بعد obturator which is the nerve of the medial compartment of the thigh, it is also contributing a genicular branch to the knee joint. Then the nerves of the posterior compartment of the thigh. ठीक है. posterior compartment जो nerve आ रहा था, that was the sciatic nerve which divides into tibial and the common peroneal nerve. These two nerves they are also communicating to the, they are also contributing to the innervation of the knee joint. ठीक है. तो सारों के सारे nerves जो हैं वो contribute करते हैं. तो याद रखने की खास जरूरत नहीं है, राइट? वैसे भी आपको याद हो जाता है. उसके बाद जो movement possible है knee joint, ठीक है, there are the flexion, extension, medial and the lateral rotation. ठीक है. Flexion, extension, medial rotation and the lateral rotation. Achha. These are the flexors of the knee joint, the muscles of the posterior compartment of the thigh. These are the extensors of the knee joint, the muscles of the anterior compartment of the thigh. ठीक है. The quadriceps femoris muscles. उसके बाद sartorius, gracilis and semitendinosus muscle. Sartorius is the muscle of the anterior compartment of the thigh, which was one of the tricky muscle. It was involved in the flexion and the lateral rotation of the hip joint, and it has got flexion and medial rotation of the knee joint. ठीक है. उसके साथ gracilis muscle है और semitendinosus muscle है. These are involved in the medial rotation of the knee joint. ठीक है. Then the lateral rotation, it is made possible by the biceps femoris muscle. Here you can see the extensors of the knee joint. अच्छा, उसके बाद gluteus maximus muscle जो है उससे जो ये iliotibial tract है, this is also involved in the straightening of the knee joint, right? अच्छा, these are the extensors of the नहीं यार ये तो extensors नहीं है. biceps femoris muscle और semitendinosus muscle ये जो है ये muscle, these are the flexors of the knee joint. ठीक है. While these are the extensors, ये slide जो है ये थोड़ी बहुत हेरा फेरी होगी. These are the flexors of the knee, these are the extensors of the knee joint. The muscles on the interior surface of the thigh, they are the extensors of the knee joint. ठीक है. अच्छा जी, knee joint के relations. Anteriorly, the prepatellar bursa is present. Posteriorly, the contents of the popliteal fossa. ठीक है. Popliteal artery, vein, lymph node, tibial and the common peroneal nerve, and the muscle forming the boundaries of the popliteal fossa. While medially, the three muscles are present: the sartorius, gracilis, and the semitendinosus. While laterally, there are only two muscles: the biceps femoris and the common peroneal nerve. ठीक है. knee joint तो खत्म हो गया. उसके बाद अभी चंद क्लिनिकल पॉइंट्स हैं. ठीक है. चलें देखते हैं आपकी स्टेमिना जो है वो कितनी है. ठीक है. अच्छा जी, कुछ समझ आ गए? पल्ले पड़ा कुछ कि नहीं? एक अमल होता है जिसे कहते हैं लॉकिंग ऑफ द नी जॉइंट. ठीक है. एंड हाउ इट अकर्स, इट इज डन बाय medial rotation of the femur as the space available at the lateral condyle of the tibia is being used by the lateral condyle of the femur during extension. ठीक है. अच्छा, तो हमारे पास लॉकिंग में क्या होता है, ये भी एमसीक्यू पॉइंट है. फीमर रोटेट हो जाता है, मीडियली रोटेट हो जाता है. ठीक है. कथा सो خپل خپې ته وګورئ کنه, د خپل خپې ته وګورئ کنه, تاسو څنګه چې ودرېږئ کنه نو تاسو د پتون دیسي میانس طرف ته تاو شي, د پتون دیس د میانس طرف ته تاو شي. This is the medial rotation of the thigh over the tibia, right? Therefore, the lateral femoral condyles act as an axis for the medial femoral condyles to rotate backward. ठीक है. अच्छा, lateral femoral condyle जो है वो अपनी जगह
वो एक्सिस का काम देते हैं या वो फुलक्रम का काम देते हैं, और मीडियल फीमोरल कंडा जो है उसको पीछे की तरफ ले जाते हैं, सो दैट द medial rotation of the thigh is made possible, right? This movement is aided by oblique pull of the ligaments of the knee joint. ठीक है, जो ligaments हमने डिस्कस कर लिए, especially the lateral and the medial collateral ligaments, they are obliquely pulled, and the contraction of the quadriceps muscle, ठीक है, the ligaments are pulled and taut when the knee joint is locked in place, right, during standing position. आप अगर स्टैंडिंग पोजीशन में है, ठीक है, तो आपका नी जॉइंट लॉक है, आपके लिगामेंट जो है वो खिंचे हुए हैं, दे आर टॉट, राइट। और जब आप उसके बाद अनलॉक करते हैं नी जॉइंट को, ठीक है, तो विच इज मेड पॉसिबल बाय the popliteus muscle, ठीक है, one of the muscle which is situated on the posterior surface of the knee joint. It causes the action which are opposite to the one discussed above, right? When the knee joint is flexed, it is unlocked, ठीक है, by the popliteus muscle through the lateral rotation of the femur. Simply आप ये याद रखें लॉकिंग एंड अनलॉकिंग ऑफ द नी जॉइंट में, कि लॉकिंग के दौरान क्या होता है, लॉकिंग किस पोजीशन में होती है, एक्सटेंशन में होती है, अनलॉकिंग फ्लेक्शन में होती है, ठीक है, ये पहला पॉइंट है। उसके बाद दूसरा, लॉकिंग में क्या होता है, लॉकिंग में हमारे पास क्वाड्रिसेप्स कॉन्ट्रैक्ट होते हैं और लिगामेंट जो है वो ऑब्लिकली पुल हो जाते हैं और टाट हो जाते हैं, ठीक है, फीमर वो मीडियली रोटेट कर जाता है, तो हमारे पास नी जॉइंट लॉक हो जाता है। जबकि अनलॉकिंग में क्या होता है, अनलॉकिंग में हमारे पास पॉप्यूलर मसल पुल करता है और फीमर इट इज रोटेटेड लेटरली ओवर द टिबिया, राइट, टू अनलॉक द नी जॉइंट। अच्छा जी, इस डायग्राम में थोड़ा बहुत आपको दिखा हुआ है, ठीक है, the medial rotation of this is the partial extension, while this is the full extension, and in full extension you can see the femur bone, it is rotated medially, ठीक है। अच्छा, and this is the popliteus muscle जो कि lateral rotation करेगा, ठीक है, इसको पुल करेगा, दिस इज द लेटरल कॉन्डाइल, इसको अपनी तरफ खींचेगा, तो द फीमर इट विल बी रोटेटेड लेटरली, ठीक है, ये लेटरली रोटेट कर जाएगा और हमारे पास नी जॉइंट जो है वो लॉक हो जाएगा, ठीक है। सो आपको ये एमसीक्यू भी आ सकता है कि द मसल व्हिच इज इन्वॉल्व्ड इन द अनलॉकिंग ऑफ द नी जॉइंट, इट इज नेम्ड एज पॉप्लिटिस मसल। अच्छा, उसके बाद आपके जो स्नेल एनाटॉमी के बुक के क्लिनिकल कोरिलेशन है, सारों के सारे मैं सिर्फ स्क्रीनशॉट आपके साथ शेयर करूंगा और उसके बाद मैं आपको एक ओवरव्यू दूंगा, आप फिर अपने लिए वो एक रीड दे सकते हैं, ठीक है। स्ट्रेंथ ऑफ द नी जॉइंट को जो स्ट्रेंथ दिया हुआ है, तो कैप्सूल, उसके बाद लिगामेंट्स हैं और उसके बाहर क्या है, मसल्स हैं, ठीक है। दीज आर द थिंग्स व्हिच आर फॉर द स्ट्रेंथनिंग ऑफ द नी जॉइंट। अगर एक बंदा आपके पास आता है और एक एज्ड मेल है या फीमेल है एंड ही इज कंप्लेनिंग ऑफ द नी जॉइंट एंड यू डायग्नोज हिम एज ऑस्टियोआर्थराइटिस, ठीक है, तो नी जॉइंट को फिर आप क्या करेंगे, उसमें चूंकि वियर एंड टियर का प्रोसेस स्टार्ट हुआ है, तो आप नी जॉइंट की सपोर्ट को ज्यादा करेंगे। और आप सपोर्ट किस तरह देते हैं, आप उसे एक्सरसाइज सिखाते हैं ताकि जो मसल्स है विच आर सराउंडिंग द नी जॉइंट, दे आर स्ट्रेंथन एंड दे प्ले रोल इन द स्ट्रेंथनिंग ऑफ द नी जॉइंट, राइट। अच्छा, उसके बाद नी इंजरी एंड द साइनोवियल मेम्ब्रेन, ठीक है, साइनोवियल मेम्ब्रेन। अच्छा, अगर आपके पास नी जॉइंट में कोई इंजरी होती है बिकॉज ऑफ द ट्रामा, पेनिट्रेटिंग, परफोरेटेड और ब्लंट ट्रामा, तो हमारे पास क्या होगा, ब्लीडिंग होगी या कम से कम एडिमा तो होगा। तो जो साइनोवियल मेम्ब्रेन है उसकी एक्सटेंशन ऑलरेडी आप आज के लेक्चर में आप देख चुके हैं, ठीक है। तो वहां पर क्या होगा, वहां पर ये एडिमा और ये ब्लड एक्यूमुलेट होगा, ठीक है। तो आपके पास पेन होगा और स्वेलिंग होगी, ठीक है, खलक شوي زنقون مولا كده ورتا كده انه worse parcel ده، ठीक है, because of the edema due to the inflammation in the knee joint, the knee joint is swollen, right। अच्छा जी, ligamentous injury of the knee joint, ठीक है, हमारे पास चार इंपॉर्टेंट लिगामेंट है, the collateral ligaments, lateral and medial, and the cruciate ligament, the anterior and the posterior, ठीक है। अच्छा, तो ये लिगामेंट जो है, these are one of the most commonly injured ligaments in the knee joint, ठीक है। كخبا فرس ka bahar sanga walegi په فوټبال کې چې تفلت اولګي د فرس کې کسرتاو شو زموږ سره بس کی دا هغه ligament the four main ligaments which are supporting the knee joint, and these four ligaments they can be easily injured, right.
सो द लेटरल, द मीडियल कोलैटरल लिगामेंट, लेटरल कोलैटरल लिगामेंट एंड द क्रूशिएट लिगामेंट। अच्छा, तो इसमें आपको मैं बताता चलूं, द मीडियल कोलैटरल लिगामेंट ये क्यों इंजर होगा? बिकॉज ऑफ द फोर्स्ड एबडक्शन। medial collateral ligament is present on the medial side, right? So अगर आप लेग को एबडक्ट करेंगे, ठीक है, फोर्सफुली एबडक्ट करेंगे, ठीक है, तो medial collateral ligament स्ट्रेच होगा, and of course you can imagine that it will be ruptured, right? अच्छा, इस डायग्राम में मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, ठीक है। फर्स्ट का was the, this is the rugby player, right? And because of the direct impact on the knee joint, this here the medial collateral ligament is present, and this will be stretched. As you can see here, this will be stretched and it can be easily ruptured, ठीक है। अच्छा, उसके बाद जो बम्पर इंजरी होती है, ठीक है, आप में से काफ़ी सारे बंदे होंगे जिसके साथ लाइसेंस नहीं होगा और वो गाड़ियों को बैठे हुए हैं, ठीक है, कस्टम चोर गाड़ी चले या फिर उसकी सही गाड़ी देखो लगा बस जाने जोर गाड़ी का तला वो नास्ते और तब बगैर लाइसेंस او رورا ځان دغه جوړ کړی دی ریس هیرونه سیف علي خان هغه ځان جوړ کړل کنه یا فاست اینڈ فیورس فلم کتل او بس خط تیز را روان دی په گاډي کې یو کسي په بمبر باندې وو کنه دا زی ولو ټیک ته نو دا بس کیږي دا غو میډیل کولیټرل لیګمنٹ او ورسره میډیل مینسکس دا پورا ډیمیج کوي ٹھیک شو جی اچھا جی this doctor this is examining the patient, the knee joint of the patient, and this test is for the testing of the anterior cruciate ligament patency, while this backward movement which he is giving to the tibia, this is for the testing of the posterior cruciate ligament, ठीक है। अच्छा, फिर दो और कंडीशंस हैं, नीमो आर्थ्रोग्राफी, ठीक है। नीमो मीन्स एयर, ठीक है, हवा या एयर, आर्थ्रो मीन्स जॉइंट एंड ग्राफी मीन्स टू सी, ठीक है। ग्राफ सॉरी टू नहीं, टू सी नहीं, ग्राफ का मतलब है ड्रा करना, ठीक है, इमेज लेना या ड्रा करना या तस्वीर बनाना या खींचना, ठीक है। सो इट इज अ प्रोसीजर इन विच एयर इज इंजेक्टेड इनटू द नी जॉइंट कैविटी and then images are taken, right? अच्छा, और एयर में ये खासियत होती है कि ये एक्सरेस को ब्लॉक नहीं करता, ठीक है, तो हमारे पास कॉन्ट्रास्ट बन जाता है और हम नी की एनाटॉमी को या उसके पैथोलॉजी को इजीली वो स्टडी कर सकते हैं। उसके बाद एक और प्रोसीजर है आर्थ्रोस्कोपी, ठीक है। आर्थ्रोस्कोपी, आर्थ्रो मींस जॉइंट एंड स्कोपी मींस टू व्यू, ठीक है, उसे देखना। अच्छा, तो हमारे पास नी जॉइंट में हम ऐसा कहते हैं कि जिस तरह लेप्रोस्कोप होता है, लेप्रोस्कोप की तरह कैमरा होता है नी जॉइंट में, ठीक है, वो हम अंदर डालते हैं और फिर नी जॉइंट के पैथोलॉजीज को या उसके एनाटॉमी को हम विजुअलाइज कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा जी, अभी अगर आपके कोई क्वेश्चंस वगैरह हैं तो वो बता दें।